हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डील विद फूड। यार मैंने एक डिश देखी, टर्किश डिश, इट्स कॉल्ड किब्बे। उसमें पता है क्या क्या हुआ था? सो दिस लेडी, शी हैड टेकन लॉट ऑफ बर्गलर व्हीट व्हिच लुक्स क्लोज टू आवर सामा ओनली. बर्गलर व्हीट इज लाइक छोटा छोटा wheat का दाना, and then she blended it with boiled potato. So मैंने सोचा कि wheat तो अपने को यूज करना नहीं है, I have to make it gluten free. So I can use sama because it looked exactly like what this burglar wheat looked like. I can blend it with steamed potatoes instead of boiled potatoes. And so उसको blend करने के बाद she had put one layer नीचे in the baking dish, and उसमें she had put minced meat and beef. So instead of that, I think we can put some minced vegetables and ऊपर से and बहुत सारा processed cheese डाला and बहुत सारे pine nuts डाले. अब यार पाइन नट्स टर्की में मिलते होंगे सस्ते, या हिंदुस्तान में तो बहुत महंगे भी हैं, इतनी गर्मी भी है. सो मैं तो गरीबों का नट पीनट डालने वाली हूँ. सो एंड ऊपर से उसने वापस से वही लेयरिंग करी एंड देन शी बेक्ड इट एंड इट्स कॉल्ड किब्बे. एंड वो बड़ा अच्छा काटा एंड स्लाइसेस दे दिए. सो आई एम थिंकिंग लेट्स डू इट द वन वी रिप्लेस इट विद मिलेट, एंड सेकंड थिंग वी रिप्लेस इट विद vegetables instead of meat. And the third thing, we replace processed cheese with our cashew cheese. Simple. कहानी खत्म. बना लेते हैं अपना vegan किब्बे. Let's go to the kitchen. So guys, I have made samak. Samak को बनाने के लिए we've already done this video earlier, but in case you want to know, 1 katori of samak and 2 katoris of water will give you this rice. And I've grated some steamed potatoes, around 7-8 of them. ये 1 कटोरी सामक है. and इसको अब हम मिक्स करेंगे with, अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे. in the original किब्बे रेसिपी that I saw, बहुत सारे तरीक़ों का किब्बे है. there are some patties, there are some cutlets like we always make, but ये वाली रेसिपी मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी because it was slightly different than. So some Himalayan pink salt, some black pepper, and some oregano, thyme, parsley. थोड़ा सा hand से क्रश करके. चलो अब इसको अच्छे से we'll mix it with your hands if you just. So after we've kneaded the dough nicely with hands, इसको अब हम एक बेकिंग ट्रे ऐसे इसमें सेट करेंगे एंड अच्छे से और maybe I think I should just put a little and वहीं पे सेट कर दूँ ऐसे ऐसे. हाँ, आई थिंक ये बेटर है, आइडिया है. थोड़ा थोड़ा रख के इसको पूरा सेट कर देते हैं. चलो तो ये पूरा नीचे एक लेयर बना दिया है. नाउ गाइज आई हैव ऑलरेडी मेड दिस बिकॉज एक तो रोहित बड़ी लेट आता है. रोहित मेरा आजकल कैमरामैन हो गया है एंड आज हमारी टीचर का लेक्चर भी है 8 बजे. सो 8 o'clock I have to log in, so quickly I'll do this. So quickly I'll tell you मैंने इसमें क्या किया है. इसमें onions and tomatoes are roasted. बीन्स, कैरेट, बेल पेपर, पालक गैस बंद करने के बाद डालिए. एंड देन इन द ओरिजिनल किब्बे यू हैव टू पुट 7 काइंड्स ऑफ मसालास. द 7 काइंड ऑफ मसाला में सबसे पहले है सॉल्ट, देन इज योर पैप्रिका, देन इज योर ब्लैक पेपर, देन इज योर ड्राइड हर्ब लाइक पुदीना. एंड वेरी नाइसली उन्होंने एक कुछ लेबनीज या टर्किश मसाला बताया जो कि मुझे समझ में नहीं आया, बट वेरी स्वीटली शी सेड इफ़ यू डोंट हैव दिस मसाला यू कैन यूज़ गरम मसाला. सो गाइस इसमें है गरम मसाला अपना सब कुछ. एवरीथिंग इज अवेलेबल इन योर किचन. सो why I've roasted onions and tomatoes is because I thought अगर मैं सब कुछ रॉ डालूंगी तो बहुत गुई हो जाएगा, बहुत मेसी हो जाएगा. तो नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल की ज़रूरत होती है. सो लेट्स जस्ट पुट दिस एंड मेक अ लेयर. तो ओरिजिनल रेसिपी में वो लोग वीट, बर्गलर वीट को ब्लेंड करते हैं उसके साथ, मीट के साथ, एंड देन अंदर भी दे पुट अनदर काइंड ऑफ मीट फिलिंग, एंड आई जस्ट replaced it with that. Yeah, so
with all the vegetables. So that's the only thing. And थोड़े मैंने almonds and peanuts डाले. As I told you, pine nuts I'm not going to put because one, it's extremely hot. Two, it's extremely expensive. When you're trying something new, you might as well try with something which is not that expensive. So थोड़ा अच्छे से डाल देती हूँ मैं इसके अंदर. And there you go. So once you've made that layer, after this and there's some bell peppers. I'm sorry, I keep forgetting. Let me just check once again. So there are bell peppers, there's palak, there's, so pyaz and tomatoes were roasted. The water was reduced. Then after switching off the gas, I've put finely chopped beans, carrots, palak and bell peppers, green, red and yellow. Okay, and I've also put almonds and some peanuts. Okay, I think yes, now I've remembered everything. So nicely I've made one layer of vegetables. इसके बाद वो लोग डालते हैं इसमें बड़ा सारा ढेर सारा प्रोसेस्ड चीज़. सो मेरी बुद्धि घूमी कि प्रोसेस्ड चीज़ की जगह हमारे पास है हमारा वेरी good cashew cheese, which I've taught you in many videos that you have to make it with cashews, garlic, potato, one or two potatoes, and then just blend it nicely to a smooth paste. और उसके बाद अभी इसमें भी cashews में भी थोड़ा सा oregano डाल दूँगी. So I think it should work out well. और बस अब इसके ऊपर वापस से अपना सामक एंड पटेटो का वो बना के पतला ही कर लूँ. आई थिंक और द थिनर इट इज़ गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी बेटर. गाइज आई डिसाइडेड कि छोटे छोटे बैचेस में इसको ऊपर से कवर करना ज़्यादा आसान है. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन बिग रोटी, लेट्स जस्ट कवर इट लाइक दिस. थोड़ा सा और एंड देन वी आर गुड टू गो इन द अवन. सो अवन में इसको तब तक रखना है जब तक कि ऊपर का लेयर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए. उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा तेल डाला था, but I think I'm going to just brush it with a little bit of oil and not ढेर सारा तेल, just little bit of brushing and then it's good to go in the oven. There you go. And for those of you who don't have an oven at home, you can take a frying pan like this. I'm using my stainless steel frying pan and do exactly the same procedure. And फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको पका लेना. फिर ढक्कन लगा के you just remove it and flip it and then cook from both sides. Okay, and side से इसको थोड़ा अगर टूट रहा है तो bind it. It will bind beautifully because of the potatoes and the samak. Everything is very sticky. Do exactly the same thing like we did for the oven. But now we are putting all the vegetables. Then we put in the cashew cheese and फिर last में इसको top it up with one more layer and cook it on slow flame on the gas. Done? We're done. Your Turkish kibbeh, vegan kibbeh, oil-free kibbeh is ready. वो लोग deep fried भी करते हैं guys. So ये नीचे बिठा देते हैं जरा अच्छे से. Okay guys, this is ready. It took about 25 minutes and I've taken out one piece and I'm going to put it on the plate. And while this was being done, Rohit has already had his salad on the side and his coconut milk. So I don't have anything to really plate it nicely. So Rohit, just taste this and tell me, baby, how is it? I can't, it will be so hot. Yeah, it will be very hot, so just looks be good careful. Yeah.
Yeah, it's hot and nice. Nice? And there's black pepper I can see. Yeah. Some lesson is also there. Garlic is also there. Yeah. And so that's what I can say. Okay, so And you taste can yummy. so you can go to your room in your place and Yeah. start eating it, Yeah. you and Arjun. I am going for the session now with Anju. So thank you very much, guys. This is Kibbeh from Heal with Food.